Hello, hello. Good morning, student. Morning, everyone. And is the second chapter of the physics of a kinematics, two-dimensional of a motion, and the motion in the plane. Okay. And in this chapter, we can learn about that the vector. In the previous chapter, we have also recalled that the addition of a vector and the subtraction of a vector and the direction and the what is the unit vector and what is position vector and etc. And we can also learn, but also recall you how to use in the motion in a plane in the kinematics in the two dimensional of a vector. Okay. And two dimensional and three dimensional also I can told you that the and what is its condition and how it is work in that the vector, and what is the projectile motion, and what is the inclined plane of a motion. Okay, and it's it. Now we start the motion in a plane. Okay, motion in a plane. Okay. Now the vector form. The first point is vector. Suppose there are two vectors, vector of A and vector of B. If I add it to each other, I can also draw that vector of A and the vector of B also. Okay, so vector of A plus of vector of B. That's very simple. So the direction also here is the same direction. Let's see, is the same direction of a vector. So I can write that the vector of A plus of vector of B. Okay, and same vector if I repeat and the direction if I change, what it's will happen? Please see, vector of A and vector of B. So sir, we can write vector of A and vector of B. Vector of A and vector of B equals to vector of A plus of minus vector of B, plus of minus vector of B. Sir, how it is work? Because at the first time we can see that the direction is same with each others, but in the second time I can also see that the direction is opposite with each other. So here we use that this addition, but for the direction I can also use that the negative sign. Okay, I can also use that the negative sign. So it is the vector of addition and same as vector of subtraction. Acha. How it is work in the motion in a plane? We have also learned that the vector of addition and vector of subtraction. But how it's work in the motion in a plane? Please see how it is work. Okay. Suppose it's a surface. It's a surface and this is the block and its mass is m. M equals to mass of a block. Okay. And if I apply the force, F equals to suppose 2 Newton, and it also comes and change its position, and it comes here and change its position from the origin. So as a observer I see, देखिए suppose it is the mass of a m, the block of the mass of a m. We can apply the force. if इस साइड में मैंने ब्लॉक को अप्लाई किया, फोर्स अप्लाई किया, कैन ऑल्सो अप्लाई द फोर्स ऑफ ए 2 न्यूटन. सपोज 2 न्यूटन, 4 न्यूटन, 10 न्यूटन as you wish, can apply that the 2 Newton, and the block is create distance and change the position and the block come to this side. So sir, x equals to displacement here, okay, and
force F equals to 2 Newton here. समझ में है? It is the first case, and same block, the second case, it is a surface. If I apply the force in the opposite direction, suppose F equals to 2 Newton, the same force is applied from the opposite direction, and it's also changed its direction, and the origin shifted from that the over the x distance. So here x is the displacement here. Yeah, x is the displacement, and the force F equals to 2 Newton. So the total force F total equals to 2 plus 2 Newton equals to 4 Newton. 2 plus 2 equals to 4 Newton. So it is the addition of the vector. Okay, sir, I learn about the addition of a vector, but please say that the subtraction of a vector. Same here. Same here. Please see. F total equals to plus 2 Newton, but in this side I can also apply the force in opposite direction. So we use that the 2 plus minus of 2 Newton. So 0 Newton is the force. Force is the 0 Newton. It is a subtraction. So F total equals to subtraction of a vector. Okay. Representation. Please see. Third point is representation. Representation of a vector. Okay. Force F equals to mod of F dot F cap. We can also write that the F equals to mod of F dot F cap. Whenever we see that the chapter of vector here, mod of F, that's mean the magnitude, and the F cap, this is the direction. So sir, total force F total, we can write the magnitude into direction. So the total force equals to the multiplication of magnitude and direction. ये भी लिख सकता हूँ, and this is the vector form of motion in a plane. Okay. Representation complete. So the vector addition and the subtraction, and apply the force opposite direction, same plane, opposite direction, and how it is work. And I can also see that the representation, how it is represented here. F total equals to magnitude and direction, and the unit vector. The unit vector. Here we learn the magnitude of the unit vector equals to 1. Only this is the enough for the motion in a plane. The magnitude of the unit vector is 1. Okay. And position vector. Sir, what is the position vector? Please see. This is the x-axis, y-axis, and z-axis also. Okay. From the vector, we see along the x-axis, we write over here I cap, and along the y-axis is j cap, and along the z-axis it is the k cap, and it is the alpha angle, it is the beta, and it is the gamma angle. Okay. So sir, position vector, now we can see it is the coordinate point. So this is the
point of coordinates is 0 0. Okay, if I throw a particle from the point, if I throw a particle from this point, suppose I throw in this over here, okay, in this over here, 1 2 3 4 5 5 1 2 3 4 4. So the position p equals to 5 4. I can also write that the position 5 and 4 also. So 5 p 5 4, 5 is along x axis, and 4 is along y axis also. So along x axis, sir, I can write I cap, and along y axis I can write j cap. So sir, 5 I cap and 4 j cap you can write. Yes, this is the 5 I cap and 4 j cap. Okay. Along the x-axis and along the, sir, z direction, and z direction over here 0. So sir, along the z axis 0 k cap, x y z k cap. Okay, it is the position of a vector. Complete. So now I can write over here the displacement of a vector. Displacement of a vector. So displacement of a vector, please see, suppose it is the xyz coordinates. Okay, x y and z coordinates. So sir, along xy I cap and y j cap and z k cap. So I throw that the particle from that the point of coordinates 0 0, it is over here the position of a p, suppose 2 3, and it is also I can throw that the point of q 5 4. Okay, and I added them p and q, and this is the o 0 0. So sir, o point 0 0 coordinates, and the p is 2 3 and q is 5 4. So sir, I also write that the p coordinates 2 I cap plus 3 j cap and 5 I cap plus 4 k cap, 5 I cap plus 4 k cap, 2 I cap plus 3 j cap, 5 I cap plus 4 k cap, sorry, 4 j cap, 4 j cap, because along the 5 is along the x-axis and 4 along the y-axis, and the point of a p 2 is along the x-axis and 3 is along the y-axis also. So I can also told you that the x-axis along I cap, y-axis along j cap, and z-axis along k cap. So that's simple. Okay. And sir, what is the magnitude? The magnitude, magnitude, that's mean the point of a pq point. So pq point of a pq equals to xxyy. Okay, or this is the coordinates of 0. So 0q and 0, sorry, oq and op, there are two lines oq and op. So I can write oq minus op, oq minus op. So sir, oq, along oq no, 5 I cap plus 4 j cap minus of 2 I cap. I can also put this value only, and 3 j cap. So I cap 3 I cap plus j cap. It's the answer. It is the magnitude also. It is the magnitude. It is the magnitude also. So sir, unit vector. What is the unit vector or direction?
Unit vector, please see, unit vector is equals to, अच्छा देखो, pq by mod of pq. Okay, तो pq by mod of pq, this is the unit vector. तो pq मतलब pq, that is the 3i cap plus j cap, 3i cap plus j cap by mod of 3i cap plus j cap. तो 3i cap plus j cap, 3i cap plus j cap by mod of root over of 3 square plus of 1 square. Okay, 3 square plus of 1 square. So this is the unit vector. अच्छा, अब क्या condition? What is the condition? So motion in a straight line, I can also describe that the vector, vector addition, vector subtraction, and the unit vector, and the position vector, and the displacement vector also. Okay, and now we can see that the projectile motion also. Okay, let's see. Sorry, projectile motion. अच्छा, at first, what is the definition of projectile? Projectile means, that means if I throw that a particles from the point of O, that the 0 point, the particle is flight over here and it's down on the x-axis also. So this is the height of maximum, this is the height of maximum height, and it is the height, and it is the height, it is the height, it is the height of the form, it is the, but the maximum height is represent the h max also. Okay, and the particles, suppose this is the particles also, the time of flight t ascending and t descending is the time of flight. Here t ascending equals to t descending along the x and y axis, and the particle cover the state pole, this is called range, that's mean r. Okay, along the x-axis. So said important point, what is the important point of projectile motion? Number one, if I throw the particles, it's change the position and it's create at a distance or range at the time. So the velocity also here and the acceleration also here. Okay, so what is the velocity? So velocity along x-axis equals to ux, along x-axis equals to ux, and the acceleration along x-axis equals to ax. So along the x-axis and along the y-axis, it creates a velocity and acceleration too. The velocity along y-axis is uy and acceleration along y-axis is ay. Okay, ay. Do you understand? Velocity along the x-axis is ux and acceleration is ax, and along the y-axis uy and the acceleration y is ay. Okay, so sir, as the vector form, we learn that the
along x-axis is cos theta, and there are two components. Along x-axis is cos theta and along y-axis is sin theta also. Okay, and this is the angle between them. So that along x-axis I can write the cos theta and y-axis I can write sin theta. Obviously, there is no doubt. So that ux along the y-axis I also write ux cos theta, and along the y-axis I also write uy sin theta. Uy sin theta. Yes, no problem. But sir, what is the acceleration of the along the x-axis and what is the acceleration along the y-axis? And there is that the problem here. It creates a problem along the x-axis and y-axis. The acceleration. देखिए, along the x-axis the acceleration is 0. Acceleration is 0. But sir, why it is 0? Because there is no force along the y-axis. I can also throw that the particle along the x-axis, but I don't throw that the particle along that the vertically. I don't throw the particle along the vertically. That's mean y-axis I don't throw. Also through that the particle along x-axis. So at the gravitation, it's also downfall over here. So along x-axis is acceleration is 0, but along y-axis the acceleration is minus of g. So why minus of g? Because g is gravitation, but I also threw the particle upward or vertically, so the gravitation also minus of g. So minus of g, minus of g, minus of g, minus of g. But in the second time it's also plus of g, because the particle at come here at the top position. So this is the time ascending and this is the time of flight of descending. So time ascending and time descending is equal. I also write here the time ascending and time descending, time a equals to time d. So g, what is the g? g is नीचे से खींच रहा है, मतलब इसलिए क्या, माइनस ऑफ जी, ग्रेविटेशन माइनस ऑफ जी. बट मैं क्या किया है, ये जो पार्टिकल है इसको मैंने अपर लेवल से थ्रो किया, तो ग्रेविटेशन नीचे से खींचेगा. तो अगर नीचे से ये इसको खींच रहा है तो ग्रेविटेशन क्या होगा, माइनस जी होगा. और ये देखो टाइम असेंडिंग और टाइम डिसेंडिंग में क्या होगा, ग्रेविटेशन प्लस जी होगा. क्यों प्लस जी होगा, क्योंकि ये तो नीचे ही में तो गिरेगा ना, इसीलिए तो प्लस जी होगा. अब समझ में है? हाँ, तो along the x-axis acceleration is 0 and along the y-axis acceleration is minus of g over here. Okay, अच्छा हो गया. और रेंज, इट इज़ द रेंज. अच्छा, अब मैं क्या दिखाऊंगा, इसका फार्मूला, क्या क्या फार्मूला है. ठीक है, देखो. नंबर 1 टाइम ऑफ फ्लाइट. टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है, t ascending equals to t descending. There are two equal. So sir, ta equals to td equals to, also write 2 into देखो uy by ay, 2 into uy by ay. तो uy that's mean along y-axis the velocity. Please see, along y-axis the velocity uy sin theta. Okay. So tu sin theta. So I write 2u sin theta by ay along ay g. So I can also put over here g, but g is minus of g. But in the numericals I also
write that the minus of g, but in the theoretically I also g is the not mentioned over here, because there is no need to that the plus minus. Whenever I solve that the numerical, then also write over here minus of g. Okay, so sir, time ascending equals to time descending, and it is a two part, so we multiply that two, so 2 into uy by ay. Okay, so 2u sin theta by g. Suppose they ask that the time of ascending, what is the time of ascending, so ta equals to uy by ay. So u sin theta by g, u sin theta by g, or time descending uy by a uy by ay, so u sin theta by g. Okay, so we can multiply over, we can add them, so 2uy by ay. Okay, so uy 2uy, because here time ascending and time descending is the same over here, that's और कुछ नहीं. ओके, अच्छा. नंबर 2, अच्छा टाइम ऑफ फ्लाइट नंबर 2. नंबर 2 क्या है, मैक्सिमम हाइट. हाइट क्या होगा, मैक्सिमम होगा. मैक्सिमम हाइट क्या है, मैक्सिमम हाइट h max, h max मैक्सिमम हाइट. तो h max इक्वल्स टू u. अच्छा, फर्स्ट आप लोग बोलिए, तो h max क्या है, अलोंग x एक्सिस या y एक्सिस. h max मैंने इसको पार्टिकल के थ्रू कर दिया, ठीक है. also true that the particle at the top position this is, and the distance covered from that the x axis, it is the maximum height. okay, तो maximum height along, देखो along y axis the maximum height is also here, and along x axis is here, but in the x axis also measure them from that the x axis, but it is the along the y axis over here, it is the same distance, ठीक है. तो h max क्या हो, what is the h max, तो uy by 2ay, uy square by 2a, sorry uy square by 2ay. sir uy square, why it is uy square, uy that's mean along the y axis uy 2 time uy or uy square, okay, by 2 into ay that's mean नीचे से खींच रहा है जो पार्टिकल, देखो एवरी टाइम इट्स कमिंग टू दैट द डाउनवर्ड डायरेक्शन, सो g is over here minus of g. okay, so this is the uy square by 2ay. so we can put the value uy u square sin square theta by 2 into ay, that's mean g. number 3, range of projectile. तो सर रेंज, देखो रेंज दैट्स मीन the point of O, that's it's cover the distance and it's come to that the suppose point of P, and OP is that the range, OP over here the range also. okay, so range along the x-axis, so we can write the r max, sorry not the r max, r equals to, so it is the displacement over here, so s equals to, we know that the from the kinematics, what is the s equals to ut, s equals to ut plus of half a t square. so
all along the x axis. Okay, all along that the x axis. So I can also write that the is x equals to uxt plus of half ax t square. So sir, ux equals to u cos theta, ux cos theta you can write, or u cos theta भी लिख सकते हो. तो u cos theta I can also put that the u cos theta. Okay, and t, what is that? The t means time of flight. What is the time of flight? Time of flight 2u sin theta by g. तो 2 into 2u sin theta by g प्लस देखो हाफ ए टी स्क्वायर ए एक्स टी स्क्वायर ए एक्स दैट्स मीन एक्स इक्वल्स टू जीरो, दैट्स मीन द इक्वेशन इज जीरो. तो प्लस ऑफ जीरो, तो 2u square sin theta cos theta. Okay, 2u square 2, at firstly I write that the 2, and u is u square is sin theta into cos theta by g. तो u स्क्वायर को मैंने फर्स्ट में रखा इंटू 2 साइन थीटा कॉस थीटा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा बाई जी, दैट्स मीन u स्क्वायर 2 साइन थीटा कॉस थीटा. व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ 2 साइन थीटा कॉस थीटा? व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ साइन 2 थीटा? थैंक यू, साइन 2 थीटा इट इज द फॉर्मूला ऑफ 2 साइन थीटा होल डिवाइडेड बाई जी. तो r इक्वल्स टू u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी. कंप्लीट. दैट इज द रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल. ओके, so the range of projectile is r equals to u square sin 2 theta by g. Okay, number 4, that's the maximum range, the maximum range, that mean r max. अच्छा, r max अगर theta equals to 45 degree, then r max equals to, I can also put that the u square sin 2 into 45 degree 2 theta by g. तो sin 45 degree, so u square by g. तो 2 into sin 90, sin 2 into 45 that's mean sin 90. तो sin 91, तो u square by g आंसर होगा. तो r max equals to u square by g. ओके, अच्छा, कंप्लीट. उसके बाद देखो ये हो गया कंप्लीट नंबर 4. और नंबर 5 और भी एक एंगल है जिसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंटरी प्रोजेक्टाइल मोशन और कॉम्प्लीमेंटरी एंगल ऑफ प्रोजेक्शन. कॉम्प्लीमेंटरी, सुनो पहले सुन लो. कॉम्प्लीमेंटरी दैट्स मीन व्हाई वी कैन टोल्ड देम दैट द कॉम्प्लीमेंटरी, बिकॉज द सम ऑफ टू एंगल्स is 90 degree, that is called to that the complementary. Okay, तो complementary angle, sum of two angle, sum of two angle equals to 90 degree, so it is called to that the complementary angle. तो रिटिन फॉर्म क्या होगा? थीटा और 90 डिग्री माइनस थीटा, और ये भी लिख सकता हूँ 45 डिग्री प्लस थीटा, या तो 45 डिग्री माइनस ऑफ थीटा, ये भी लिख सकता, जो कुछ भी. क्योंकि अगर थीटा का वैल्यू अगर मैं जीरो बैठा दूंगा तो 90 माइनस जीरो दैट्स मीन 90. अगर थीटा का वैल्यू जीरो तो 90 माइनस जीरो दैट्स मीन 90 डिग्री. अगर थीटा का वैल्यू थीटा इक्वल्स टू जीरो, अगर थीटा इक्वल्स टू 180 डिग्री दैट्स मीन 90 और 180 ले लूँगा तो 90 डिग्री माइनस ऑफ 180 डिग्री हो तो माइनस 90 डिग्री हो जाएगा. एंड माइनस दैट्स मीन डायरेक्शन. आई कैन ऑल्सो टोल्ड यू दैट द डायरेक्शन ओवर हेयर, सो द टोटल सम इज 90 डिग्री. अगर 45 प्लस थीटा, अगर थीटा इक्वल्स टू 45 डिग्री ले लूँगा तो 45 डिग्री प्लस 45 डिग्री तो क्या हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा. देखो एवरी टाइम दिस इज
द टोटल सम ऑफ 90 डिग्री. सो दिस इज कॉल्ड टू दैट द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल. प्रूफ कैसे सर? प्रूफ दिखाइए. ओके, प्रूफ 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 करके दिखा रहा हूँ. अच्छा, ये जो प्रोजेक्टाइल मोशन देखा था, ये जो प्रोजेक्टाइल मोशन था अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग वाई एक्सिस, अलोंग एक्स एक्सिस, इट इज़ द कॉस थीटा, यू एक्स कॉस थीटा, सॉरी यू कॉस थीटा अलोंग द एक्स एक्सिस एंड अलोंग द वाई एक्सिस यू साइन थीटा था, यू साइन थीटा था, और ये 0 था. ठीक है. अच्छा, आर थीटा दैट्स मीन, देखो आर थीटा मैंने क्या लिखा, थीटा और 90 डिग्री माइनस थीटा, थीटा और 90 डिग्री माइनस थीटा 90 डिग्री होना चाहिए, द सम ऑफ टू एंगल. तो थीटा, देखो थीटा और 90 डिग्री माइनस ऑफ थीटा, तो ये दो एंगल का अगर मैं साम कर लूँगा, थीटा प्लस 90 डिग्री माइनस ऑफ थीटा, दैट्स मीन थीटा थीटा कट जाएगा तो 90 डिग्री आंसर आ जाएगा क्या. तो रेंज को, अगर ये प्रोजेक्टाइल इस साइड में मैंने फेंका, ये इधर नीचे आया, ये जो रेंज है ये तो आर रेंज, ये तो रेंज है आर, दैट्स मीन डिस्टेंस. तो ये जो थीटा और 90 डिग्री माइनस थीटा देखा, तो ये जो थीटा और 90 डिग्री माइनस ऑफ थीटा, ये दोनों का अगर मैं साम, इस दोनों का साम अगर 90 डिग्री हो जाएगा तो ये प्रूफ हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल. देखो, तो अलोंग आर थीटा इक्वल्स टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी. क्यों? देखो आर थीटा, आर रेंज क्या लिखा था, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी लिखा था, तो ही तो मैंने बैठाया. तो इधर देखो आर थीटा इक्वल्स टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, एंड आर 90 डिग्री माइनस थीटा, तो आर 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होगा, बैठाओ, यू स्क्वायर साइन 2 इंटू 90 डिग्री माइनस थीटा बाई जी, तो यू स्क्वायर साइन 180 डिग्री बाई जी, 90 डिग्री माइनस थीटा, तो यू स्क्वायर साइन 2 थीटा, सॉरी ये देखो ये थोड़ा सा गलत हो गया, इधर 180 डिग्री नहीं होगा, इधर 180 डिग्री, ये छोड़ो, ये फार्मूला लगा, साइन 2 इंटू 90 डिग्री माइनस थीटा मतलब साइन 2 थीटा. ओके, साइन 2 थीटा बाई जी, तो आर 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल्स टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, और आर थीटा इक्वल्स टू देखो यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी. तो सर आर थीटा इक्वल्स टू आर 90 डिग्री माइनस थीटा, ये दोनों तो सेम हो गए, एंड इसका साम क्या है, मैंने अभी अभी देखा है, थीटा प्लस 90 डिग्री माइनस थीटा, इसका साम क्या होगा, 90 डिग्री अगर हो जाएगा तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, तो ये दोनों का क्या है, सेम हो गया, दैट्स मीन कॉम्प्लीमेंट्री एंगल. साम 90 डिग्री मतलब ये सेम है, इसका साम भी 90 डिग्री और इसका साम भी 90 डिग्री, दोनों का साम तो 90 डिग्री है, तो दैट्स मीन सेम है, दिस इज द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल. ओके, तो प्रूफ हो गया, आर थीटा इक्वल्स टू आर 90 डिग्री माइनस ऑफ थीटा, आर 90 डिग्री माइनस ऑफ थीटा, प्रूफ. बट इन द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, अच्छा ये है प्रूफ, A5 ए पॉइंट, तो रेंज क्या है, सेम एज आर थीटा इक्वल्स टू आर 90 डिग्री माइनस थीटा. समझ में आ रहा है? तो आर, ये जो रेंज है ये क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में रेंज सेम होगा, द रेंज of the complementary angle as the point of r theta and r 90 degree minus theta is equals और same. पॉइंट नंबर ए. पॉइंट नंबर बी में देखो, तो सर रेंज दिखा दिया, आप प्रूफ करके दिखाइए सर टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा या तो हाइट ऑफ फ्लाइट. पहले हाइट ऑफ फ्लाइट मैं प्रूफ करके दिखा रहा हूँ, उसके बाद टाइम ऑफ फ्लाइट दिखाऊंगा, ठीक है. अच्छा देखो, हाइट ऑफ फ्लाइट, द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ द हाइट ऑफ फ्लाइट सेम एज, तो हाइट ऑफ फ्लाइट क्या था,
इधर हाइट ऑफ फ्लाइट क्या था, एच मैक्स, तो इधर मैं क्या दिखाऊंगा, एच थीटा एंड सेम एज एच 90 डिग्री माइनस थीटा, ये दोनों अगर रिजल्ट सेम आ जाएगा तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो जाएगा। ठीक है, प्रूव कर रहा हूँ। तो देखो एच थीटा इक्वल्स टू क्या था, देखो एच थीटा इक्वल्स टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर टू थीटा बाई टू जी, देखा, तो एच मैक्स इक्वल्स टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई टू जी। तो इधर मैंने बैठा रहा हूँ एच मैक्स इक्वल्स टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई टू जी एंड एच 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल्स टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा बाई टू जी। ओके, तो यू स्क्वायर, अच्छा साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल्स टू क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू जी। कॉस स्क्वायर थीटा ट्रिगोनोमेट्री में देखो साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू जी। ओके, तो यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू जी और यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई टू जी, तो क्या है, सेम है। तो ए इज थीटा इज नॉट इक्वल्स टू ए इज 90 डिग्री माइनस ऑफ थीटा, सो ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा, नहीं सर, ये तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल नहीं होगा, तो नहीं होगा, इट इज़ नॉट द कॉम्प्लीमेंट। सो द एच height is not the complementary angle of projection, okay, but range is the complementary angle of projection is equals, okay. अच्छा, time of flight, number C, time of flight। तो सर टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा, टाइम ऑफ फ्लाइट में देखो मैंने क्या बोला था, टी असेंडिंग एंड टी डिसेंडिंग। देखो इधर क्या है, इधर से जाएगा टी असेंडिंग, एट द टॉप पोजीशन में पार्टिकल चला गया, और टी नीचे आ जाएगा टी डिसेंडिंग। एट द फर्स्ट टाइम इट्स गोइंग अपवर्ड टू दैट द टी असेंडिंग पोजीशन, एंड इन द सेकेंड टाइम इट्स कम डाउनवर्ड, दिस इज द टी डिसेंडिंग पोजीशन। एंड द टाइम ऑफ फ्लाइट we can over here prove that the t theta and t 90 degree minus theta is it equals or not, okay। देखो तो t theta, what is the t theta, that's mean देखो टाइम ऑफ फ्लाइट कितना था, रेंज एट टाइम ऑफ फ्लाइट t इक्वल्स टू टू यू साइन थीटा बाई जी, तो लिखो टू यू साइन थीटा बाई जी, टू यू साइन थीटा बाई जी and t 90 degree minus theta equals to 2u sin 90 degree minus theta by g। तो 2u sin 90 degree minus theta that's mean cos theta by g। तो t theta और t 90 degree minus theta is it equal, there are difference, both are difference, t theta or not equals to t 90 degree minus theta, that's mean it's not a complementary angle, प्रूफ हो गया। सो द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इज ऑल्सो द रेंज ओवर हेयर, ओके, इज ऑल्सो द रेंज ओवर हेयर। अच्छा हो गया, इसका न्यूमेरिकल्स बाद में करवाऊंगा, ओके, इतना तक रहना।